Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing fine. I'm Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be resuming the lecture of chapter 6 from the novel Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips. Before starting the lecture, let me again remind you that your attendance is of utmost importance. What you have to do, you have to fill the form and submit the attendance form so that we could keep track of your attendance. Plus, do subscribe the channel and follow and go through all the lectures. Listen them carefully so that we could complete our syllabus in time. So let's resume our lecture. Before starting the next portion of chapter 6, let's just recapitulate the previous discussions in this chapter. In this chapter, we studied that how Catherine positively affected the life of Mr. Chips. Not only the life, but his character as well. He became vibrant, he became lively, and he became more jolly in the company of Catherine. Catherine not only affected the, you can say, behavior of Mr. Chips, but rather she changed the outlook, or at least she tried to change the outlook, the way Mr. Chips used to see the world. So she wanted him to be a bit more open, bit more radical. In this regard, writer is narrating an incident in which Catherine asked Mr. Chips and Brookfield that the boys of the missionaries should come here and they should play a match with the boys of the Brookfield. Now, this very suggestion met a very harsh criticism, and people or the Brookfieldian they started criticizing it. They said that this adventure would not prove good or would not prove healthy. Why? Because these were the slum boys, the boys of the missionary school. Say they could not be comfortable with the Brookfieldian boys. Plus, there might be some incident, a kind of unpleasant incident, but Catherine persisted on her view, and she wanted badly that there should be a kind of an interaction, a physical intimacy uh, between the missionary people, missionary students, and the Brookfield students. So let's continue from the point we left it yesterday. This is page number 14, and this is last para. Page number 14, last para. You open up your book and be on page number 14. Rather to her surprise, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal, and the volte-face was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. फिर कैथरीन को बड़ी हैरत होती है कि जो मिस्टर चिप्स हैं वो आखिरकार कैथरीन के इंसिस्टेंस के सामने सरेंडर करते हैं और वो भी एडवोकेट बन जाते हैं इस बात के, या वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ब्रुकफील्ड के बच्चों को लाजमी तौर पर मिशनरीज़ के बच्चों को इनवाइट करना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए। जब अथॉरिटीज़ को वो कायल करते हैं तो अथॉरिटीज़ भी आखिर में ये एक डेंजरस किस्म का डिसीजन लेने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना कंसेंट दे देती है। कंसेंट मतलब रजामंदी। द बॉयज़ फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रुकफील्ड। पॉपुलर से बॉयज़ आ गए ब्रुकफील्ड में वन संडे सैटरडे आफ्टरनून। Played soccer with the school's second team, were honorably defeated by 7 goals to 5, and later had high tea with the school team in the dining hall. So there had been a wonderful match. Missionary school were defeated. Missionary school was defeated, or their boys were defeated, but that defeat was very much graceful. 5 और 7 का मुकाबला हुआ। 7 पॉइंट से या 7 गोल से जो है वो ब्रुकफील्ड के बच्चे जो है वो जीत गए। उसके बाद जनाब उनके ऑनर में, उनके एजाज़ में एक हाई टी का अहतमाम किया गया। स्कूल की टीम ने उनके साथ मिलकर डाइनिंग हॉल में हाई टी ली। They then met the head and were shown over the school, and Chips saw them off at the railway station in the evening. फिर उन्हें हेड से मिलवाया गया और उन्हें पूरा स्कूल दिखाया गया और चिप्स खुद शाम को उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए। Everything had passed without the slightest hitch of any kind.
पूरा जो इवेंट था वो बहुत ही खुशगवार तरीके से सर अंजाम दिया गया और कोई भी स्लाइटेड हिच मतलब कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई रेजिस्टेंस जो है वो नहीं आई। And it was clear that the visitors were taking away with them as fine an impression as they had left behind. और साफ ये जाहिर था कि ना सिर्फ ब्रुकफील्ड ने बहुत अच्छा इम्प्रेशन उन पर डाला स्लम बॉयज़ पे, या बॉयज़ जो मशीनरी से आए थे वो बहुत अच्छी यादें अपने साथ लेके जा रहे थे, लेकिन ना सिर्फ लेके जा रहे थे बल्कि छोड़ के भी जा रहे थे एवरीथिंग। अच्छा जनाब, सो दिस इज़ पेज नंबर 15 नाउ। They took back with them also the memory of a charming woman who had met them and talked to them for once year later during the war. A private station at a big military camp near Brookfield called on Chips and said he had been one of that first visiting team. और ना सिर्फ वो स्कूल की बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे थे, बल्कि ये जो बच्चे थे जो मिस्टर चिप या कैथरीन के कहने पर ब्रुकफील्ड बुलाए गए थे, वो अपने साथ एक ऐसी औरत की यादें भी लेके जा रहे थे जो बहुत चार्मिंग वुमन थी और जो उनसे मिली और उनसे बातें की। एक ही दफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा वो मिली थी कैथरीन, लेकिन उसकी जो याद का नक्श था या उसका जो इम्प्रेशन था उनकी ज़िंदगी में वो काफ़ी गहरा रहा। और ये कैसे पता चलता है कि ईयर्स लेटर ड्यूरिंग द वॉर, हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, एक मिलिट्री कैंप में एक प्राइवेट स्टेशन था, मिलिट्री कैंप बना हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्रुकफील्ड के करीब ही था ये स्टेशन, वॉर स्टेशन, मिलिट्री कैंप। तो वहाँ से एक कॉल आई चिप्स को, और वहाँ से एक जो बंदा था उसने फ़ोन करके कहा कि मैं जो हूँ वो मैंने ब्रुकफील्ड को विज़िट किया था, उस पहली टीम में जो टीम आपके यहाँ आई थी, और मैं आपकी वाइफ से मिला था। मतलब he could still recall her. Chips gave him tea and chatted with him till at length, shaking hands, the man said, "And how's the Mrs. Sir? And remember her very well." उसने कहा, चिप्स ने सिर्फ चाय वाय पिलाई और दे चैटेड अ लॉट, उन्होंने गपशप लगाई और फिर उसने कहा कि सर आपकी मिसेस कैसी है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह अभी भी याद करता हूँ या याद कर सकता हूँ। डू यू रिमेंबर हर? चिप्स आंसर्ड ईगरली। चिप्स ने कहा, क्या तुम वाकई अभी तक उसे याद कर सकते हो या याद करते हो? ईगरली मतलब बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ। रादर आई शुड थिंक एनीवन वुड। वो कहता है किसी को भी याद होंगी वो। क्यों? क्योंकि कैथरीन की पर्सनैलिटी जो थी, इट वॉज सो इंटिमिडेटिंग, इट वॉज सो यू कैन से टावरिंग दैट नोबडी कुड फॉरगेट हर। इतनी चार्मिंग उनकी पर्सनैलिटी थी कि कोई उनको भूल नहीं सकता था। एंड चिप्स रिप्लाइड, दे डोंट यू नो, एट लीस्ट नॉट हेयर। वो कहते हैं हाँ, ये लोग नहीं भूलते उसको, at least not here. यहाँ boys come and go, new faces all the time, memories don't last, even master don't stay forever. वो कहते हैं लड़के आते हैं, ज़ाहिर है नए स्टूडेंट्स आते हैं, पुराने बैचेस पास आउट हो जाते हैं, हर टाइम न्यू चेहरे आते रहते हैं, इवन मेमोरीज डोंट लास्ट। कभी कभार यादें भी धोखा दे जाती हैं, ज़ाहिर है जब आप बहुत एज हो जाती है आपकी तो फिर यादें भी जो हैं वो ब्लर होना शुरू कर देती हैं। एंड मास्टर्स डोंट स्टे फॉरएवर, और जो टीचर्स हैं वो भी ज़ाहिर है हमेशा नहीं रहते, वो भी चले जाते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग कैथरीन से रिलेटेड थे या कैथरीन के ज़माने में थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे थे, और मेमोरीज़ भी जो हैं उनको लग रहा था चिप्स को कि वो भी साथ शायद ज़्यादा देर तक ना दे पाए। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड ही इज़ द स्कूल बटलर, देयर हैज़ नॉट बीन एनीवन हियर हु एवर सॉ माय वाइफ। वो बोलते हैं उस पिछले साल जब ग्रिबल रिटायर हो गया, ग्रिबल उस ज़माने में वहाँ बटलर था, बटलर मतलब बेटा एक बटलर कहते हैं कुक को, एंड देन ईयर, अच्छा जनाब, वो तो कहते हैं वो आखिरी बंदा था जिसने मेरे वाइफ को देखा था। शी डाइड यू नो लेस देन अ ईयर आफ्टर यू विजिट इन 1908। उसका इंतकाल हो गया था। शी डाइड, कैथरीन बता रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर उसने पूछा ना हाउस योर मिसेस, तो वो बता रहे हैं कि शी डाइड एक साल उस विज़िट के बाद, जो विज़िट मिशनरी के स्टूडेंट्स ने लगाया था, उस विज़िट के एक साल बाद वो मर गई थी 98 में। आई एम रियल सॉरी टू हियर दैट सर, देयर इज़ 2 or 3 of my pals anyhow who remember her clear as anything, though we did only see her that was. Yes, we remember her all right. वो कहता है कि मैं ना सिर्फ, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये ख़बर सुन के
और ना सिर्फ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कैथरीन, बल्कि हम शायद से उनसे सिर्फ उसी वक्त मिले थे एक ही बार, लेकिन अब मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जिनको वो बहुत अच्छी तरह याद है। आई एम वेरी ग्लैड दैट वॉज अ ग्रैंड डे। वो कहते हैं हाँ मुझे बहुत खुशी है, और वो दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़ा। वी ऑल हैड एन अ फाइन गेम टू, और एक बहुत अच्छा गेम उस दिन जो है वो प्ले किया गया। वन ऑफ द बेस्ट दैट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ। और ये जो दिन था वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन था। विश इट वॉज देन एंड नॉट ना स्ट्रेट Wish it was then and not now straight. I do. I'm off to France tomorrow. वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने वो एक बहुत अच्छा दिन गुजारा, और अभी मेरे को जो ना जाना पड़ता, लेकिन मैं कल जो हूँ वो फ्रांस जा रहा हूँ। A month or so later, Chips heard that he had been killed at Shendale. और फिर एक महीने बाद तकरीबन चिप्स को पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट था उनका, ये जो लड़का था जो कि अब एक सोल्जर था, वो शेंडेल में मारा गया फ्रांस के साथ लड़ते हुए। सो दिस वाज एक्चुअली द लास्ट पर्सन हु had met Catherine, and with whom Chips could recall the memories of her beloved wife. So you can see that this chapter was one of the very tender and very energetic sort of chapter, in which writer has casted light on the character of Catherine. कैथरीन का कैरेक्टर बहुत बिल्ड किया, उसको एज अ रेडिकल फेमिनिस्ट दिखाया गया है यहाँ, जो कि माशरे में चेंज लाना चाहती है और पुरानी रसूमात को तोड़ना चाहती है, और उसके लिए बहुत डेयरिंग स्टेप्स लेने की भी उसने कोशिश की। और ये इंसिडेंट जो है वो ऐसा ही एक स्टेप था, और इन्हीं चीज़ों ने उसकी, इसी पॉजिटिव गुड नेचर ने उसको हर एक के लिए हर दिल अजीज़ बना दिया था, और इसीलिए वो हर एक की मेमोरीज़ में अभी तक ज़िंदा थी। सो वी हैव एंडेड द चैप्टर टुडे। Tomorrow we'll start chapter number 7. Until then, Allah Hafiz, take care.